क्या हुआ? मैं उसको पूछ रहा हूँ और क्या। देख रहा है क्या मोबाइल से? हाँ वही वही कर रहा है क्योंकि ये तो One world, one ride. Good morning, guys. This is Devashish. Today we're going to Puno. Puno is around some 386 kilometers. Time travel would be 6 hours, 3 hours, I don't know. देख डीजे डीजे फिर आ जाऊंगा। नहीं डीजे मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। देख मेरे स्पीड में तू अनकंफर्टेबल होता है, तेरे स्पीड में कंफर्टेबल तू चल। नहीं क्योंकि मेरे को क्या थोड़ा इसका मोटा ये फिटनेस लग ही रहा है मेरे को। हाँ तो अगर ऐसा कुछ रहेगा तो रुकूंगा ना मैं। क्या ऐसा क्या करता है? बाद में आगे रहेगा तो फिर बाद में कहना तू अगर रुक गया खुद आराम से आ जाऊंगा। हाँ नहीं कोई नहीं मैं आराम से चल रहा हूँ। तू तेरे हिसाब से चला, तू सोच भी मत मैं पीछे हूँ, ठीक है ना? तू आराम से चला। तू सोच ले मैं आगे चला गया और मैं चल रहा हूँ आराम से। वो ऐसा फिक्र मत कर। मेरे को ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है रे। स्लो और फास्ट में मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। देख दोनों में से किसी को भी अनकंफर्टेबल फील हुआ तो एक दूसरे के लिए तो एडजस्ट करने का ही है ना। हम करते रहेंगे क्या उसमें। तेरे को अनकंफर्टेबल फील होगा बोल देना, रोक देना बाजू में, अपन आराम से चलेंगे और क्या। कुछ नहीं, वो वे अहेड ऑफ टाइम है। अभी क्या खाली 9:30 बज रहा है। आराम से चल। अंदर जा अंदर जा अंदर जा अंदर जा। आराम से, इधर घाई मत कर। ये बहुत छोटा रास्ता है, चलने दे आराम से। बाद में ये थोड़ा बड़ा रोड मिला ना फिर हचक देना। So all the riders who want to ride this route, the road is good, except for some bad patches inside the city. Otherwise, the highways are quite good of Peru. Just see to it that you stick to road 6236. Any more information, I will keep updated. अच्छा, इधर अपने लिए टोल नहीं है। ये डीजे ये अपना इन लोग का इनका एक तरह से आदिवासी जुड़ा ना। हाँ और क्या? तो साला अपने को इसका कम है क्या? अरे वारली ट्राइब, उन लोग का क्या एक से एक पेंटिंग, एक से एक कल्चर। यार ये सब अपना भी कंट्री का हाईलाइट करना चाहिए यार। इतना दूर से इनका सिविलाइजेशन क्या है? इन लोग शेतकरी करते थे ना, घूम फिर के तो वही हुआ। इन लोग का पेंटिंग, इन लोग का हैंडलूम्स, हैंडीक्राफ्ट्स। अरे अपना कंट्री तो कितना आगे है ये सब चीज़ों में। So earlier the expected time of arrival according to Google was 3:30. Now it's become 3:10. Wow, not bad. At this speed also we are quite good enough. I think if we go non-stop, I think DJ will need a fuel, and if we go non-stop, then we should be there by 2 o'clock. Then we'll take a call whether to cross the border today or not. About Peru, I think
corn, all sorts of corn is their main product. And the river which you see every time we come across now and then is the lifeline of Peru. Or at least in this region. Because the main civilization is in this, the main, I think, economy would be this region. The rest is the desert, but there in the desert you have the coastal, so I think fish is, now you see this river is, I think, is the lifeline of this region. Since we have climbed the mountains, we are seeing this river going throughout. So the Inca civilization, all I think is connected. I think is connected to this river. But the surprising thing is how they used to make salt was really very amazing. चर्च बड़ा मस्त है। राइट, आजा रीजा। ओके, राइट। किधर गया है? क्या इधर ही किधर तो है? अरे यार एक मिनट, भेंचोद। वो पुलिस है, थोड़ा आगे इधर लगा लगे। मेरे को लगता है नो एंट्री तो नहीं है। नहीं नहीं, वो उधर से बोलता है, क्या है समझ में नहीं आता। रुक, रूट करेगा ये? नहीं रुक ना। अरे समझ में नहीं आता यार। करके पूछा ना, साइड में लगा के यहीं पे। होटल दिस होटल वेयर? ¿Por dónde queda ese?
amigo. Yeah, where is this hotel? Buenos dias. Amigo, where is this hotel? क्या हुआ? मैं उसको पूछ रहा हूँ और क्या. देख रहा है क्या मोबाइल से? हाँ वही वही कर रहा है. हाँ. पार्किंग का लोचा चल डीजे आगे ले. मैं इधर इधर बाजू में खड़ा करके मैं जाके आता हूँ. हाँ तो जाके आ. थोड़ा आगे ले, थोड़ा आगे ले. और बोल. बस 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 बस. हाँ. Okay guys, so we've reached Puno, not Puna, Puno. Puno is a border town of Peru. Tomorrow we're gonna go to Bolivia, La Paz. Distance is 350 something, and yeah, time travel will be 6 hours. We need to cross borders, whatever. The town is a very small town. The hotel is good. We got it for $35, and the ride was excellent. I would say, yeah, a lot of crosswinds, but the whole scenario changed from the great mountains and full of vegetations. Okay, but it is, it's higher than Cusco. Small little town. Okay, nice place to stop overnight. And to all the lovely people who's watching this, enjoy yourself, and yeah, the roads were excellent, no problem. Google sometimes plays trick, but follow the highway. Anyways, to all the lovely people who are watching this video, thank you for watching, and stay blessed and love you all. Bye bye. One world, one ride. Lack of oxygen on high altitude in the town of Puno, that is the last biggest town of Peru country, and we are leaving the Peru today, but Devubai got some oxygen problem, so the hotel arranged the oxygen and he is taking the oxygen.